Assalamu alaikum, dear students. So today's topic: winds, storms, and cyclones, Part 5, Class 7th. We were discussing about how wind currents are generated, and as I have discussed in the last session, that these are generated due to the uneven heating between the equator and the poles, or the uneven heating of the water body and the land mass. And I have told you about the land and sea breeze. In the last session, we discussed about the sea breeze and the land breeze. Now, the sea and the land breeze. Now, we will be discussing about what happens in summers and winters. How the uneven heating of land and water occurs during summers and during winters. Now, during summers, during summer, during summer. And what happens, as I have told you, that near equator is just like same like the sea breeze and the land breeze. Now, what happens during summer near equator, as I have told you already, near equator, equator is a line which dissects, which divides the earth into two equal parts. It's an imaginary line. What happens near equator if this is sun? As you know, have came to know that the equator receives the bulk of the sunlight, and these poles, this is pole, these are the two poles, they are covered with ice for most part of the year. They are covered with ice. Pole, east, west, it's north pole, and it's south pole. It receives most amount of the sunlight, and due to this the land warms up faster. The land here, the land gets warmer faster, and most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in oceans. Now what happens? The land mass here, it gets heated up quickly than the water bodies or than the oceans. अब क्या होता है, the air over the land gets heated and rises due to this heating. As you know that due to this heating, the air gets expanded and it gets lighter, and it tends to move upwards. The over the land gets heated and it rises upwards. This causes the wind to flow from oceans towards the land. As this rises upwards, it the vacuum is created here. Vacuum is created. Vacuum is, and to fill this vacuum, the free air from the south pole and north pole come rushing towards this portion as I have told you already, that when the air gets heated up, it rises upwards, and space is a vacuum is created here. To fill this vacuum, the heavier air from the poles come rushing towards this. This causes the winds to flow from oceans. This causes the winds to flow from oceans towards the land. Let's explain you once more time. This is land. This is land, and this is ocean. During summer, the land gets heated up, heated up quickly than the water body. The land mass gets heated up quickly. जल्दी गर्म हो जाता है निस्बती किसके, पानी की. जब ये जल्दी गर्म हो गया, जो इसके ऊपर एयर था, जो हवा इसके ऊपर थी, वो गर्म होगी, वार्म होगी, and it rises up. ऊपर चढ़ गई. अब जो यहाँ ओशंस है, यहाँ से अब यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट, यहाँ से हवा आ गई.
यहाँ से हवा आ गई टू फिल दिस वैक्यूम, इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए। अब जो ये हवा यहाँ से आ रही है, ये ओशंस के ऊपर ये हवा है। अब इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होता है मॉइस्चर। These are moisture laden winds. These are moisture laden winds. इनके साथ मॉइस्चर होता है, पानी होता है, पानी के कतरे होते हैं इसके साथ। अब जब ये यहाँ आ जाता है, दिस कॉज भी, अब यहाँ विंड, ये होगी विंड, कहाँ से आ गई, ओशन से टुवर्ड्स द लैंड। अब जो ये विंड्स है अपने साथ क्या लाती है, पानी। जब ये यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ पे आ गई, फिर से गर्म हो गई, ऊपर चढ़ गई। जब ये ऊपर जाएंगे, राइज अप फिर से हो जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दे विल गेट फ्रीज, फ्रीजिंग हो जाएगी इसकी। और वहां जो इसको वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ रेन। दीज आर कॉल्ड, इनको कहते हैं, जो अपने साथ रेन लाते हैं, जो अपने साथ रेन लाते हैं, इनको हम कहते हैं monsoon winds. These are called as monsoon winds. क्यों इनको कहते हैं, because monsoon निकला है, it's derived from, this monsoon is derived from Arabic word meaning मौसम, Arabic word meaning मौसम, which means season, or this, so these are also known as seasonal winds. Seasonal winds अपने साथ रेन लाती है, they bring rain with them, इसलिए हम बोलते हैं monsoon winds bring rain with them. अब जो ये हो गया, it's during summer. In winter the direction of wind flow gets reversed, अब रिवर्स हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, इसकी कूलिंग जल्दी हो जाती है, इसकी कूलिंग, ये जो लैंड है, इट गेट्स कूल्ड स्लोली, तो ये रिवर्स, फिर विंड्स लैंड से टुवर्ड्स ओशन फ्लो होती है। इन विंटर क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो gets it gets reversed. That's, it flows from, they flow from land to sea or ocean. As you all know that जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री है वो क्या है, दैट इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, दैट इज इंडिया is a agricultural based country. जो मोस्ट हमारा जो इकोनॉमी है, इट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो हमारे जो 60 to 70% जो हमारा वर्क फोर्स है, दैट्स इन्वॉल्व विद द एग्रीकल्चर। अब जो ये है, द winds from the ocean carry water and bring rain, it's a part of the, ये फिर ये वो तो वाटर साइकिल बन जाता है। अब इसके साथ जो मूनसून विंड्स हैं, ये अपने साथ क्या लाती है, रेन, ये अपने साथ रेन, इसके साथ it also brings happiness for our farmers, because our farmers are mainly dependent on this rain for their agriculture. अगर ये नहीं होगा तो उनका एग्रीकल्चर सारा खत्म हो जाएगा, और वो फाका कशी पे हो उतर आएंगे। इसीलिए आप देखोगे, जब रेनफॉल कम होती है, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो बहुत सारे फार्मर्स, उनको उन्होंने लोन लिया होता है, दे गो फॉर द सुसाइड। जो हमारा जो डिपेंडेंसी है मूनसून विंड्स पे, इट्स वेरी मच, हमारी डिपेंडेंसी इस पे है। मगर कभी कभी क्या होता है, ये रेन अगर ये साथ साथ हैप्पीनेस भी लाती है, कभी कभी क्या लाती है, इसको अपने साथ बहुत बड़े डिजास्टर्स भी लाती है, एंड दीज डिजास्टर्स पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड plant life. Sometimes these monsoon winds
डिजास्टर। क्या डिजास्टर? कभी ज्यादा जब रेनफॉल होगी तो फ्लड्स आते हैं। आपने ये देखोगे बिहार में होता है, असम में होते हैं, बहुत सारे फ्लड्स आते हैं। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर को सारा खत्म हो जाता है, हमारी लाइफ, लोग मर जाते हैं, जो बाकी प्रॉपर्टी, हमारे मकान दह जाते हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं वो रह जाते हैं। अब जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, जो सिचुएशन पैदा होती हैं वो सिचुएशंस है because of these winds, the most important situations जो create हो जाती हैं, they are thunderstorms, thunderstorms and cyclones। जो ये विंड करंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो विंड करंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, उनकी वजह से two situations occur होते हैं, that's the formation of thunderstorms and cyclones। Thunderstorms and cyclones, now what are they? Inshallah we will be taking up tomorrow।